Okay, hi people. Are we live? Am I audible and visible? Can I have some responses in the chat box if I'm audible and visible? Agaste, Kushagra, Vidushi, Tenma, you guys there? Okay. So, hello, good afternoon, and welcome back to another Law and Gents YouTube channel's special session on Hindu analysis. Today is 20th of January, and we are back with the Hindu analysis. I can see your messages. ठीक है चलो बढ़िया सब लोग आ गए हैं आज क्विज भी करना है ठीक है आई होप एवरीवन इज एक्साइटेड लेट्स क्विकली बिगिन विद आवर सेशन फॉर द डे थोड़ा सा आज डिले हो गया बिकॉज देयर वर सम टेक्निकल ग्लिचेस whenever the class does not start at 3 p.m. you guys can quickly check your telegram channel the law and Trust telegram channel and वहाँ पे मैं अपडेट कर देता हूँ अगर कोई भी डिले होता है क्लास में तो because of any reason. Piyush is saying और सर कैसे हो मैं एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एज वेल चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं आज की क्लास yeah so 17th okay date is wrong here it's 20th of January date यहाँ पे अपडेट नहीं हुई है but anyway मुझे पता है आज की डेट 20th of January है so let's begin our discussion for the day like always we have a few topics which we'll discuss in detail. One is the La Perouse naval exercise, one is an editorial article on international migrant workers, one is another editorial article on radical governments and democracy. ठीक है जी and then of course we'll do our vocabulary for the day, 3 new words, and then the first quiz of this particular 2025 we have it in today's class. Okay, class में quiz करेंगे. There's a slight variation to the quiz जो कि मैं आपको एक में बताता हूँ. Stay tuned for the quiz and do share the link of this particular class अभी के अभी with your friends and other aspirants which you know of so that they can also join the class. फ्राइडे को काफी लोग है क्विज की उम्मीद में आए थे बट उस दिन क्विज नहीं हो पाया था but I have sort of made an arrangement today so we'll have our quiz and with that let's begin with our newspaper discussion for the day ठीक है जी स्टार्ट करें voice is cracking is that so am I clearly audible guys yes or no is my voice cracking probably because I have joined through my phone hotspot the Wi-Fi here was not working. Am I audible or not audible? It was cracking earlier. Not audible now. ठीक है. Whenever you guys feel that the voice is cracking or there is a glitch, please let me know immediately. I'll keep checking the chat box every few minutes. So let's begin. Let's begin with our newspaper discussion. Let me quickly present the newspaper for you all. Okay, here we go. So this is politics-based news on the left-hand side. On the right-hand side, we have poor demand hits investment by private sector in Q3. Q3 मतलब third quarter of the financial year. But ये हमारे लिए उतना important नहीं है, so we'll just move ahead. 83 injured in Jallikattu in Tamil Nadu. We have discussed all the details about the Jallikattu festival, which was organized in Tamil Nadu in the previous Hindu analysis session. Make sure you watch it. Also, in the previous session, last में I noticed that someone was asking कि Israel Palestine वाला वीडियो नहीं मिल रहा है चैनल पे. So मैं आप लोगों को जल्दी से दिखा देता हूँ कि आप लोगों को वो चैनल पे कैसे मिलेगा. Just give me 1 minute. Okay, so I can find one of the video.
the second video. Let me find out. Just one moment, guys. The internet is a little slow today, which is a little annoying. So please be a little patient with the class today. हो जाता है कभी कभी टेक्नोलॉजी के साथ ऐसा. There's a good news and there's a bad news. The good news is मुझे सलिक सर वाला वीडियो मिल गया है. The bad news is मुझे मेरा वाला वीडियो नहीं मिल रहा है जो मैंने रिकॉर्ड किया था. But anyway, chalo, let's not waste any time on that. When you guys are attempting the quiz, I'll put the link of that video in the chat box and you can access it. बाकी सर वाला वीडियो आपको ये देखो ऐसे मिल जाएगा. When you search Israel Palestine CLLST तो आपको ये वाला वीडियो मिल जाएगा and you can watch this. उसमें सर ने भी काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है and मेरा वाला जो वीडियो है उसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा in the chat box before the class ends. With that, let's begin today's session. ठीक है, चलो. So we were done with the front page. Then there is election-based news, Sunday's news for capital. There is elections in the assembly on 5th of February. This is regarding that. Rally is being lined up. And you see that continues to on. Okay, this is ठीक है. Teachers crowdfunding target in a week. पार्टी में पास फंड्स नहीं है अपना प्रमोशन कैंपेन करने के लिए इलेक्शन के लिए बिकॉज दे आर ऑनेस्ट एंड हम पैसा इकट्ठा करेंगे क्राउड फंडिंग से यानी कि लोगों से चंदा मांग के एंड उनका क्राउड फंडिंग गोल जो है कंप्लीट हो गया. 40 lakhs have been raised by 740 people in the drive. So interesting. मुझे भी इलेक्शन लड़ने चाहिए क्राउड फंडिंग. यू गाइस फंड माय इलेक्शन कैंपेन. सब लोग बस 1-1 लाख रुपए दे देना मुझे. ठीक है, चलो. Moving on to state-based news. After centers call for talks, SKM planned protest. So this is related to the farmers' protest, which is being planned, which is being happening for very long time now, and yeah, nothing that important here. Moving ahead. Nothing interesting here. 3 lakh crore financial support given to Andhra Pradesh in 6 months, says Amit Shah. They have fulfilled the Polavaram project, and Naidu seeks more hand-holding from the union government. Okay. Who's Naidu? Naidu is the CM. N. Chandrababu Naidu, the CM of Andhra Pradesh. Here you can see the picture. Moving ahead, this is not important, Education Plus. Now we're down to the editorial section. So editorial section में पहला editorial है, a surge in radical governments, the hope of democracy. Now this is an article by a diplomat and ये article किस बारे में बात करता है? काफी interesting article है. ये article बात करता है about, it draws a parallel actually between the situation of what Taliban was in 2021 and what Syria and Bangladesh are becoming now. So you guys can understand the common link, which is militancy, which is the rule of a militant group in the particular region. Now, ये आर्टिकल कहना क्या चाह रहा है? दिस आर्टिकल इज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश दैट डेवलपिंग कंट्रीज जो है पहले तो पीछे पड़ जाती हैं इन मिलिटेंट ग्रुप्स के इन ट्राइंग टू कॉन्कर देम कह लो या इवेट तो नहीं बोलेंगे, dismantle them कह लो या फिर eradicate them कह लो to the greater extent. But when they see that these militant groups take hold of the territory and they overthrow the current government, तब फिर वो थोड़ा सा ठंडे हो जाते हैं and they get pacified and they start cooperating and these governments. So give example of how Taliban right now. The maximum जो ने ये मान लिया है कि अब तालिबान रूल ही रहेगा अफगानिस्तान में एंड हमें तालिबान के साथ ही कोऑपरेट करना है. एंड एवरीवन हैज कन्वीनियंटली फॉरगॉटन द फैक्ट दैट तालिबान इज sort of a militant outfit and sort of it is a militant outfit and it has carried on so many terror activities and what are the principles and ideals, be it
in terms of women equality, be it in terms of education, be it in terms of the liberal thought, whatever. So, what my point is, I mean, not my point, what the point of this particular author is that the same thing is happening with Syria now and Bangladesh now. That now that the which was the ruling party, which was in power in those particular regions, has been overthrown by militant groups or could say radical groups. The same is happening there as well. Syria की अगर हम बात करें तो recently उनका जो leader था, he was killed, and now again militancy has taken over Syria as well. उनका जो president था, बशर अल बशर ऐसे कुछ करके, बशर अल असद ऐसे कुछ करके नाम था, and now again the same thing is happening with them. And they also talk about how India is being excluded from this process of collaboration, and जहाँ पे इंडिया अपना रोल इंक्रीज करता है, जैसे एग्जांपल्स दिए इन्होंने काफी सारे कि इंडिया ने काफी सारे कॉन्फ्रेंसेस में एंड मीटिंग्स में बोला है कि ये टेरर ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए, इनको जो है उस तरीके से कोऑपरेट नहीं करना चाहिए उनके साथ. तो इंडिया को या तो साइडलाइन कर दिया गया या उस कंट्री को उस मीटिंग से साइडलाइन कर दिया गया, विच एवर वॉज मोर कन्वीनियंट. व्हेन वी रीड द आर्टिकल यू विल गेट टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम एग्जैक्टली ट्राइंग टू से. काफी सारी चीजों के बारे में ये बात करता है आर्टिकल, बट विल कम बैक टू दिस एंड ट्राई रीडिंग द आर्टिकल एज वेल. The next article is not that important or interesting. This talks about how a historian should operate, which is not really a key area of concern, so we would not spend a lot of time. But they use the context of Ayodhya, how Ayodhya's history has been written or redefined, how there have been multiple propagandas, multiple perspectives, multiple political ideologies coming into picture, and what should be the approach of a good historian, how he should be objective in his nature, how he should not get influenced, he should base his observations and writings on the basis of primary research which he does on his own rather than relying on secondary sources. ये सारी चीजें हैं. अगर आपको इंटरेस्ट है हिस्ट्री कैसे लिखी जाती है और कैसे लिखी जानी चाहिए, तो आप डेफिनेटली इसको पढ़ो. मुझे इंटरेस्ट है तो मैंने तो पढ़ लिया था, बट आई वुड रिकमेंड कि आप लोग भी पढ़ लो. कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, बट फ्रॉम अ एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज अ गुड आर्टिकल. ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे यू सी पायरिक पीस. पायरिक मतलब एक तरीके से हो सकता है, कह सकते हो आप, टॉक्सिक, पॉइजनस. A united administration under the Palestinian Authority must be in place. ठीक है, तो यहाँ पे जो अभी हम बात कर रहे हैं, दिस इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सीज फायर विच इज हैपनिंग. बोथ द साइड्स आर प्लानिंग टू कम टू अ ट्रूस, अ समझौता, वेयर दे वुड नॉट एंगेज विद एक्टिव वॉरफेयर एनी मोर. बट अभी उतना हुआ नहीं है जो चीज होनी चाहिए. Then on the downward side, you see murder most foul. This is in context of the so being charged with. Anyway, जो होता है तो इसमें जो accused था उसको, हाँ, he's being tried for offenses which he has committed, and now that process to भूल गया मैं वो वर्ड, बट एनीवे is all about. So इसमें कुछ ज़्यादा code करने नहीं है. This basically talks about how making safe for all must be a priority for the state authorities. ठीक है. Then there is an opinion piece recasting insolvency resolution. This insolvency क्या होता है? जैसे when someone is unable to pay back their loan, they are considered an insolvent. इसका वेरिएंट होता है एक बैंक्रप्सी भी, बट वो नीश में जाने की हमें जरूरत नहीं है. दिस बेसिकली इज एन आर्टिकल अबाउट हाउ कैन वी रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंसॉल्वेंसी. सो मल्टीपल यहाँ पे केस लॉस की बात हुई है, डबल बर्डन, एनसीएलटी, आईबीसी की बात हुई. आईबीसी इज बेसिकली योर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड. जैसे क्रिमिनल ऑफेंसेस के लिए बीएनएस होता है, वैसे ही आपके जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी रिलेटेड केसेस होते हैं उनके लिए जो लेजिस्लेशन होता है उसको आईबीसी यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड कहते हैं. एंड नॉर्मल कोर्ट्स में नहीं जाते ये वाले केसेस. इन वाले केसेस के लिए अलग से एक ट्रिब्यूनल होता है विच इज कॉल्ड द एनसीएलटी और द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल. ये सब लॉ स्कूल में आके पढ़ोगे आप कि कंपनी लॉ क्या होता है, एनसीएलटी क्या होता है, आईबीसी क्या होता है. सो इसमें ज्यादा कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. जेट एयरवेज का इन्होंने एग्जांपल दिया, हाउ जेट एयरवेज बिकेम इंसॉल्वेंट एंड हाउ वी नीड अ डोमेन एक्सपर्टीज फॉर इंसॉल्वेंसी. एंड अभी वाला जो फ्रेमवर्क है हमारा उसमें काफी सारी डेफिशिएंसीज है.
यानी कि बहुत सारी कमियां हैं अभी वाला हमारा जो कंपनी लॉ फ्रेमवर्क कह लो या फिर इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क कह लो, जिसकी वजह से जो इंसॉल्वेंट कंपनीज या इंडिविजुअल्स होते हैं उन पे उतनी जल्दी एक्शन नहीं ले पाते हम लोग, एंड देर आर नॉट मेनी ऑल्टरनेटिव्स विच आर अवेलेबल so that there can be an efficient process of how insolvency is operated. Okay, that is the article. Not that important for that exam. What the ceasefire deal was for Palestine and Israel. This we have already discussed in the previous Hindu analysis. So I won't go through this again. This is more of a stats-based, number-based article. I would recommend you to go to Salik sir's video as well as my video on this particular topic of Israel Palestine to understand it better if you haven't yet. Then how is try and the government combating spam? This is spam. This is also not that important. आज के न्यूज़पेपर में काफी ऑफ बीट से टॉपिक्स हैं. कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वाले टॉपिक्स थोड़े कम हैं, आज दो तीन ही हैं, बट नेवरदलेस रोज नहीं होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले टॉपिक्स, एंड विच इज ओके. So TRAI is the regulating authority, the telecom regulatory authority of India. And what are they doing to combat spam? Let's just quickly read the gist. They regulate the telecom industry. Main role is regulating unsolicited commercial communication. तो आपके पास जो कॉल आते हैं, लोन ले लो, या फिर रिचार्ज करा लो, या फिर क्रेडिट कार्ड ले लो, तो वो वाले कॉल्स. Spam has constantly changing character. While much of spam is merely commercial messages that may be annoying but harmless, the wave of digitization has increased incentives to get around the protections against commercial messaging and calling. Firms like Airtel have taken steps to declare suspicious calls using AI as suspected spam, a move that is being replicated by other telecoms as well. So यही है ये article कि how AI is being used to identify spam calls. What did the ILO report state about international migrants? Now, this is an interesting article. इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल में भी बात करेंगे. This article is a report of 2022 by the International Labour Organization, which is a branch of United Nations. कोई मुझे बता सकता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? Where is ILO headquartered? Quickly tell me in the chat box. Voice is cracking. Is the voice cracking again? I'm sorry, I just checked the chat box. I was not looking at it. Is the voice still cracking, guys? I'm really sorry about this network glitch thing. Geneva is the correct answer. It's fine now. आज है यार थोड़ा सा, आज कुछ मुहूर्त खराब है हमारा, टेक्निकल ग्लिचेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आज. पहले क्लास स्टार्ट करने में, अभी नेटवर्क में, बट ठीक है. I'll ensure that this does not happen in the subsequent classes. It's getting bad every now and then. Yeah, there's a lot of anyway, coming back to headquarters is absolutely correct. This article talks about migrant workers. Migrant workers are the workers which migrate from their own country to a different country. Multiple reasons. The reason could be exodus. The reason could be taking refuge in that particular country. Reason could be for better work opportunities. Reason could be threat of violence. There could be any reason for migrating to another country. And this talks about international migrants. For example, laborers from India going to the Middle East or going to the US or going to any other country in search of work mostly. So ये report बताती है कि क्या numbers हैं, how many are male, how many are female, how much do international migrants contribute to the whole workforce, the global workforce, global labor force to be specific. What is the contribution of men? What is the contribution of women? How many are skilled? How many are unskilled? So उसके basis पे ये एक report है. इसके बारे में हम थोड़ी सी और बात करेंगे when we come back to our PPT. Impact of H-1B visas on the tech industry in US. तो ये आर्टिकल बताता है कि दो जो है लोग अपॉइंट किए हैं ट्रम्प साहब ने, जो कि अब पावर में भी आ गए हैं, आज आ जाएंगे, 20th है आज. Elon Musk and Vivek Ramaswamy, both immigrants, and Mr. Trump's pick to overall the US government are supportive of skilled foreign worker visa program. यानी कि people who are skilled in some particular
niche would be able to get this foreign worker visa. And good thing for Indians as well. अब इसमें टेक्निकल डिटेल्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. स्टेम वर्कर्स आर बेसिकली पीपल हु वर्क इन द फील्ड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, उसको स्टेम बोलते हैं. सो स्टेम वर्कर्स से रिलेटेड ये वीज़ा के प्रोविजंस वगैरह डिस्कस किए हैं इसमें. जो मेजरली H1B वीज़ा जो वर्कर्स के लिए होता है उसकी बात करिए, तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है. आगे इस पर कोई मेजर डेवलपमेंट होगा तो हम बात करेंगे. मूविंग अहेड. Voice is cracking again. Oh my god, yeah. Just hold on a second. I'll try to change my network once more. Just give me 1 minute, guys. Are we back? Am I audible now? भाई काफी stressful class हो आज. Are we back, people? Audible, visible. I tried changing the network, but as most of you must have realized, not a successful attempt. I've called for tech team, tech but जब तक बैकअप नहीं आता, I'll try to conduct the class using my phone internet. आज थोड़ा सा सही चल रहा है Wi-Fi. I think there's some work going on. So really sorry about the inconvenience. I'm frozen and it's lagging again. अरे यार, am I frozen? Can you guys see me? अभी भी क्रैक हो रही है. Okay, I don't know what should I do. I mean, what should be the course of action? Should I just keep on going with the class? पहले से भी ज्यादा लैग कर रहा है. Oh God. Someone is coming from the team. Just hold on a minute, guys. 1 मिनट वेट कर लेते हैं. कैमरा ऑफ कर लें. Is this better now? Is it working better with the camera being off, guys? Am I clearly audible to you? Is it working now? This might work. I think the camera would be taking some bandwidth, and without the camera it can work out. Yes? चलो ठीक है. आज फिर जुगाड़बाजी करके कैमरा ऑफ करके क्लास कर लेते हैं. ठीक है, कोई बात नहीं. ओके, आई होप एवरीथिंग इज एटलीस्ट क्लियर फ्रॉम माय एंड. फ्रॉम द माइक पर्सपेक्टिव वापस चलते हैं अपने न्यूज़पेपर पे.
जल्दी से. Okay, so we had done this particular article, H1 वीजा वाला. देन देर इज लिटरेचर वाले ये 2-3 पेजेस हम स्किप कर सकते हैं. दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस. लिटरेचर वाली कॉन्फ्रेंसेस जो हो रही हैं, लिट फॉर लाइफ. Coming back to news, cylinder blast triggers fire at Mahakum, one injured. Now, it is what it is. Like it's a one line incident. इसमें कुछ explain करने को नहीं है. एनडीआरएफ ने एंड बाकी लोकल टीम्स ने ये कंट्रोल कर लिया डिजास्टर. फायर ब्रोक आउट, सिलेंडर फट गया and आग लग गई, फिर आग बुझा दी गई. इसमें कुछ ज्यादा पढ़ने को तो नहीं है. आगे चलते हैं. जीपी सिंह अपॉइंटेड चीफ ऑफ सीआरपीएफ. सो दिस कैन बी अ वन लाइनर, तो आप याद कर सकते हो. Gyanendra Pratap Singh, in short GP Singh, has become the chief of CRPF, Central Reserve Police Force, which is sort of a force which helps the actual police force. ठीक है. Moving ahead. Nothing interesting here. Modi Trump meet on Jaishankar's 5 point agenda. So this is a meeting where they discussed this 5 point agenda by Jaishankar. This we have already discussed to a certain extent, and इसमें कुछ ऐसा important है नहीं 5 point agenda में, but ठीक है, आप लोग पढ़ सकते हो इस article को. Interesting article है. 9 navies hold joint drills in strategic trades between Indian Ocean and the Pacific. This is an important article. ये थोड़ा competitive point of view से important है. इस पे question बन सकते हैं. This is an exercise which is called La Perouse, hosted by the French Navy, hosted by France in the strategic straits of Malacca, Sunda and Lombok. तो अभी मैं आपको location दिखाऊंगा. ये straits actually कहाँ पे हैं. Crystal clear है बस. चलो सही है, बढ़िया है. सो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे. ठीक है, विल टॉक अबाउट दिस 9 navies वाला मिलिट्री एक्सरसाइज. लेट्स जस्ट सी इफ देयर इज एनीथिंग एल्स. डेट ट्रैप नॉट इम्पोर्टेंट. ASEAN tells Myanmar Junta to prioritize ceasefire over elections. Foreign ministers of ASEAN grouping. So ये एक foreign ministers की meeting हुई थी where they simply told the Myanmar Junta government to look forward to a ceasefire in the civil war. Just a second. Yeah. My team is saying camera on कर लो, वाईफाई ठीक हो गया, but no, I'm not gonna jinx it. I'm not going to experiment now. I'll tell you all the 9 countries. Kushagra will come back to the analysis and discuss that. अभी अभी जा रही है, अभी मैं कैमरा ऑन नहीं करूंगा, so bear with me. Takes hold with hand has started. The party of ousted Sheikh Hasina, and they are now mobilizing themselves, getting back on track in order to take control from the Yunus government, which is an interim government in Bangladesh as of now. Sheikh Hasina is in exile in India, which all of us know, right? Okay, moving ahead. Indian team has won the Coco World Cup, so that is one sports-based one-liner news which you need to remember. We defeated Nepal in the finals. Then anything else? Australian Open is going on. Okay, yeah, nothing else. So we'll come back to the 3 topics which we were discussing and talk about them in a little more detail. First is the military exercise, of course. I'll share that tab. Coming back to the presentation. Voice is cracking again. Arey yaar. Is it audible right now? Am I audible right now? Let me just check the Wi-Fi once again. I'll try it one more time.
Okay, it appears that the network issue has been sorted from the team's end. Am I visible, audible, non-frozen? Everything sorted now, guys? Seems like the issue has been sorted. I just received a message from the team. It's perfect now. Gotta be. It's high time. Should be perfect now. वेरी क्लियर चलो सही है वी आर बैक टू द ओजी नेटवर्क एंड अब मुझे उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आई होप कोई दिक्कत ना आए अब रियली सॉरी फॉर ऑल द इनकन्वीनियंस वी आर बैक नाउ चलो लेट्स कम बैक टू आवर प्रेजेंटेशन एंड डिस्कस द टॉपिक्स व्हिच वी हैड इन प्लान. The first is the La Perouse military exercise. Now, as we were discussing, this is a strategic exercise which is held by the French Navy in the Indian Ocean and the Pacific Ocean. And इस exercise की significance क्या है? Because this exercise is conducted in a very strategic sort of location. Why is the location strategic in the first place? Because that is the location which connects the Indian Ocean to the Pacific Ocean. These three water bodies, the Strait of Malacca, the Strait of Sunda, and Lombok Strait. मैं आपको दिखाता हूँ मैप पे ये location कहाँ पे है. देखो. This is the country of Malaysia. This is Indonesia. Between them is the Strait of Malacca here, near Singapore. The Sunda Strait is between the two island chunks of Indonesia, and the Lombok Strait is here between Indonesia and some of its other islands. So these three states, one, two, three. This is the Indian Ocean. Down south is the Pacific Ocean. Up here is the South China Sea. And we all know that China is increasing its influence and authority in the Indian Ocean region and the Indo-Pacific region to be specific. And usko counter karne ke liye this exercise has been conducted. So that is the primary goal, right? It has been hosted by France. The name is La Perouse. It's a multilateral exercise. एंड इंडिया ने कौन सा कैरियर भेजा है? इंडिया ने अपना गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस मुंबई भेजा है यहाँ पे. सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो that India has sent its guided missile destroyer INS Mumbai for the exercise, which would be working with the CSG, SG, which is the carrier strike group headed by France. France का carrier का नाम है Charles de Gaulle. Charles de Gaulle. This is the French carrier. And the group is called the CSG group of France. And India का INS Mumbai इनके साथ interoperability में ऑपरेशन करेगा. ठीक है, 3 स्टेट्स के नाम आपको पता होने चाहिए. स्टेट ऑफ मलक्का, द सुंडा स्ट्रेट एंड द लॉम्बॉक स्ट्रेट. अब इसमें कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया? 9 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया. उनके नाम क्या है? उनके नाम है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, यूके एंड यूएस. मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए 9 कंट्रीज. यहाँ पे लिखा होगा वैसे कहीं, तो आर्टिकल में ये लिखा है. Australia, Canada, France, India, Indonesia, Malaysia, Singapore, UK, US. Should I write it down or is it visible? I hope it's visible. Australia, Canada, France, India, US, UK, Singapore and Malaysia. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8. एक और रह गई कौन सी रह गई भाई? अच्छा, इंडोनेशिया रह गई. इंडिया एंड इंडोनेशिया. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, यूएस, यूके, सिंगापुर, मलेशिया. दिस इज हाउ यू कैन लर्न इट. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, यूएस, यूके, सिंगापुर, मलेशिया. 9 कंट्रीज पार्टिसिपेटिंग इन ला पेरूस. ठीक है, सिंपल एज दैट. इंडिया ने भेजा आईएनएस मुंबई एंड दिस इज गोइंग टू हैपन बिटवीन 16th January to 24th of January. So these are the important details you need to know about this particular exercise. ये एक important question है. Because it's important from a military point of view and a geopolitics point of view. तो इसको हम ध्यान रखेंगे. ला पेरूस एक्सरसाइज. ठीक है, फर्स्ट थिंग. एक सेकेंड यार, चार्जर लगा लिया जाए इससे पहले कि कोई और दिक्कत आए, लैपटॉप बंद हो जाए. Just give me 1 moment. And we move on to the next article. Okay, charger is ready. चलो, the next article is what did the ILO report state about international migrants. So मैं आपको बता रहा था international migrants होते क्या हैं, ILO की रिपोर्ट क्या कह रही है, उसके बारे में मैं आपको थोड़े से tidbits pointers बता देता हूँ. उतना ज़्यादा फैक्ट्स तो याद करने की जरूरत नहीं है आपको, बट एक बेसिक ओवरव्यू होना चाहिए कि इस रिपोर्ट में था क्या. सो रिपोर्ट बेसिकली बात करती है लेबर मार्केट में शॉर्टेजेस की, स्पेशली इन डिफरेंट कंट्रीज. One are the type of home countries, one are the countries which send the migrant.
होम नहीं, होस्ट कंट्रीज, होम इज द रॉन्ग वर्ड, होस्ट कंट्रीज एंड कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज ऐसे कह लो आप। तो जो होस्ट कंट्रीज होती हैं उसमें जो इंटरनेशनल माइग्रेंट्स होते हैं, जब वो काम करते हैं तो वो घर पे पैसे वापस भेजते हैं अपनी होम कंट्री में, which are called remittances. And we already discussed this in one of the classes that India receives the maximum remittances from its people living overseas. करेक्ट। एंड ये वाला जो था फोर्थ एडिशन था ऑफ द रिपोर्ट ऑफ ग्लोबल एस्टिमेट्स ऑन इंटरनेशनल माइग्रेंट वर्कर्स। तो इस रिपोर्ट का नाम था ग्लोबल एस्टिमेट्स ऑन इंटरनेशनल माइग्रेंट वर्कर्स, रिपोर्ट बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO। एंड ये रिपोर्ट में बोला क्या गया, रिपोर्ट जो है 2022 की है, अब जाके कंसोलिडेट होकर हमारे पास आई है। और ये कहता है कि जो ग्लोबल वर्कफोर्स है, यानी कि अगर टोटल 100 लोग काम कर रहे हैं वर्कफोर्स में, उसमें से 4.7%, नंबर्स में बात करें तो 167.7 मिलियन is comprised of the international migrant workers. This includes both the employed ones and the unemployed ones. But unemployed से मेरा मतलब है कि they are available for work, but अभी उनके पास काम नहीं है। लेबर फोर्स की जब हम बात करते हैं, we always talk about the unemployed as well as the employed. इन दोनों को मिला के लेबर फोर्स बनती है। And yeah, so that is 4.7% of the total global labor force. एंड ये नंबर जो है 2013 में ये रिपोर्ट में मेंशन है 30 मिलियन था, जो कि नंबर अब 167 मिलियन के अक्रॉस जा चुका है। एंड इसमें से अगर आप अनएम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड का रेशियो देखो तो 155.6 मिलियन आर एम्प्लॉयड एंड 12.1 मिलियन अनएम्प्लॉयड। अब ये नंबर्स आपको याद करने की जरूरत नहीं, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। एंड ये लोग रिपोर्ट में ये भी बता रहे हैं कि जो ग्रोथ रेट है, यानी कि जिस रेट से ग्रो हो रहे थे ये नंबर्स, उसमें डिप आया है 1% का। वो डिप क्यों आया? दैट इज बिकॉज ऑफ कोविड। 2019 के से लेके 2022 के पीरियड में 2-3 साल कोविड में चले गए, जिस वजह से देयर हैज बीन अ स्लाइट डिप इन द ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेंट वर्कर्स। अब इसमें फिर मेल फीमेल का भी इन्होंने बाइफर्केशन बताया है कि हाउ 61.3% आर मेल्स एंड 38.7% आर फीमेल्स। And the reason for this proportion is there are less females available to work in the global labor force as compared to men. And बाकी फिर एज वाइज क्लासिफिकेशन एंड क्राइटेरिया है। मैक्सिमम वर्कर्स ऑब्वियसली 25 से लेके 54 की एज गैप में है, which comprise of 74.9, almost 75, 2/3 कह लो, 2/3 नहीं सॉरी 3/4 कह लो ऑफ द टोटल लेबर फोर्स। अब इसमें बहुत सारे नंबर्स ही नंबर्स हैं, बट यू गेट द जिस्ट ऑफ द आर्टिकल, राइट। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं आपको बता दूं, दिस इज अ UN बेस्ड एजेंसी एस्टैब्लिश्ड इन व्हिच ईयर? एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1919। एंड और क्या पता होना चाहिए? हेडक्वार्टर पता होना चाहिए। हेडक्वार्टर है जिनीवा, स्विट्जरलैंड। एस्टैब्लिश्ड ये हुई थी किस ट्रीटी से? ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। ILO was established through which treaty? Established through the Treaty of Versailles. And पहले ये लीग ऑफ नेशंस के साथ एसोसिएटेड था ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद when UN was formed in the late 1940s, then it became an agency of the UN. सबसे पहली स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ये UN की। And the purpose is basically social justice and labor practices को रेगुलेट करना, ऑर्गेनाइज करना, ह्यूमन राइट्स, लेबर राइट्स को प्रोटेक्ट करना, यही सारा है इसका काम। ILO ने एक बार नोबेल प्राइज भी जीता है इन द ईयर 1969। तो ये भी एक फैक्ट पता होना चाहिए आपको। 1969 में ILO वन द नोबेल पीस प्राइज। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट वन। A surge in radical governments, the hope for democracy। तो ये आर्टिकल वही जो मैं आपको बता रहा था कि radical governments कौन सी? The governments in Bangladesh, the government in Syria, और previously in 2021 अगर हम बात करें the government in Afghanistan। A hope for democracy ये लोग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी जो है हम लोग उनके साथ इस उम्मीद में cooperate and collaborate कर रहे हैं कि that they would change their ways, they would change how they operate, they would change their radical thought। They're saying when Taliban was captured in 2021, जो US के ट्रूप्स मरे थे ISIS के सुसाइड अटैक में, और जो वेपनरी वगैरह उन्होंने यूज करी थी वो सब वो छोड़ आए अफगानिस्तान में, एकदम वापस चले गए US वाले लोग अफगानिस्तान को छोड़ के। एंड उसके बाद अब वो लोग जस्टिफाई कर रहे हैं कि तालिबान को हम सही से समझ नहीं पाए, तालिबान वाज मिसअंडरस्टूड एंड तालिबान के साथ हमें कोऑपरेट करने की जरूरत है सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट वुमेन्स राइट्स एंड माइनॉरिटीज राइट्स एंड देन वी कैन टेक देम अवे फ्रॉम टेररिज्म। But they don't understand that Taliban was built on the foundation of terrorism. That is what the author is trying to tell you in this particular article. कि
तालिबान में अफगानिस्तान में जब तालिबान आया था उससे पहले भी इस तरीके के काफी मूव्स लिए गए थे जिसमें अफगानिस्तान को या इंडिया को साइडलाइन किया गया फ्रॉम मल्टीपल ग्लोबल मीटिंग्स। इंडिया को इसलिए क्योंकि इंडिया वाज एडवोकेटिंग कि अफगानिस्तान में जो टेररिस्ट हैं उनको रिकॉग्नाइज करो, एंड अफगानिस्तान को इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली वहां पे टेररिस्ट है। तो उस चीज के बारे में ये आर्टिकल बताता है आपको, एंड दे आर सेइंग दैट द सेम इज गोइंग टू हैपन नाउ इन सीरिया 2024 व्हेन द president, Syrian President Bashar al-Assad has now lost power, and the radical outfit, which is led by the person called Abu Muhammad al-Julani, has taken control. And they're saying that what happened with Taliban, the same is going to happen with HTS and its leader, because the US is already expressing its support for HTS and its leader. HTS is the outfit Hayat Tahrir al-Sham, which is now taking control of Syria after Bashar al-Assad has been removed. And they're saying that same would happen with the collapsed government in Bangladesh, and how the democratic forces are trying to get back into power, but the regime change clearly shows that US is, downplaying the interest of these particular parties, and especially sidelining the interest of India, which it claims to be its strategic partner. तो यही ये आर्टिकल आपको बताता है कि कैसे यूएस जो है अपने गेम्स खेल रहा है। तो पढ़ सकते हो, इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। बट या दैट प्रीटी मच ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ आवर एनालिसिस फॉर द डे। नॉट अ लॉट टू एनालाइज टू बी ऑनेस्ट, बट let's go to the vocabulary and then let's quickly have our quiz. So the first vocabulary word of the day is melancholy. Melancholy मतलब होता है something which causes unhappiness, causes sadness. If any one of you would have read the play Merchant of Venice, आप लोग शायद इस word से रूबरू होंगे. Can anyone tell me which character expresses melancholy in the play Merchant of Venice? It's in the beginning only, in the first act. किसी को पता है? Anyone who's aware? One knows? किसी ने लिटरेचर में मर्चेंट ऑफ वेनिस नहीं पढ़ा? सिर्फ मैंने ही पढ़ा था स्कूल में। चलो ठीक है, कोई नहीं। एक कैरेक्टर था एंटोनियो करके, जो कहता था कि मैं बहुत मेलंकोलिक फील कर रहा हूँ, आई डोंट नो व्हाई आई एम सैड, ऐसा कुछ करके, तो उसका डायलॉग था। बट ठीक है, अनरिलेटेड। Anyway, synonyms are sad, depressing, mournful. Antonyms are happy, cheery, and glad. Sentences: he faced the melancholy of having to say goodbye to all the friends he had made over the summer. The next word is arcane. Arcane मतलब होता है difficult for one of ordinary knowledge or intelligence to understand. यानी something which is very deep, profound, esoteric, specific, recondite. All of these words mean the same thing, that you need specific knowledge or intelligence to understand it. आम आदमी नहीं समझ सकता उस चीज को. That is called arcane. Antonyms are superficial, simple, or shallow. This argument may seem arcane to those not closely involved with the world of finance. ठीक है जी. The last word for the day is vaticinate. Vaticinate मतलब होता है to tell or of describe beforehand, यानी कि भविष्यवाणी करना, foretell, predict करना, forecast करना, anticipate करना. Antonyms are describe, report, relate. He vaticinated a period of peace for the continent. So vaticinate means to make a forecast, a prediction. Arcane means difficult for one of ordinary knowledge to understand, and melancholy means something which causes sadness or unhappiness. That brings us to the end of our Hindu analysis session. But as promised, today is going to be a quiz. Now, there's a good news and a bad news. The good news is, of course, we are going to have a quiz. The bad news is, bad news में नहीं बोलूंगा मैं. I'm saying that there's going to be a variation in the quiz. Today's quiz is not going to be a Menti quiz. It's going to be a Google form based quiz. So let me explain you the process very quickly. There are 10 questions in the quiz. 4 options each, A, B, C, D. Only one of the options are correct. All the questions are mandatory. All the questions have 1 mark, plus 1 mark. There is no negative marking. So you can attempt all the questions. करने ही पड़ेंगे सारे attempt क्योंकि सारे mandatory questions हैं. And तुक्का मार देना जो भी ना आता हो. There's no negative marking. You have to answer all the 10 questions. I will quickly circulate the link of that Google form with you. What you need to do is just quickly fill in your details so that I can identify किसका कौन सा response है. I'll give you a minute or so to fill in your details, and then you can answer the 10 questions. Simple questions हैं, उसमें से आधे questions हम class में already discuss कर चुके हैं, so those should be easy. There are 5 more questions which we probably not have discussed in the class, but
if you have been following your GK diligently, you might know the answer to them as well. अब इसके रिजल्ट्स भी हम क्लास में ही डिस्कस कर लेंगे, तुरंत आपको आंसर्स पता चल जाएंगे. एज सून एज यू सबमिट द क्विज, यू विल आल्सो गेट अ कॉपी ऑफ योर रिस्पॉन्सेज, तो कि आप उसको ट्रैक भी कर सकते हो आगे चल के कि कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ था. एंड मुझे भी आपके रिस्पॉन्सेज पता चल जाएंगे, तो मैं विनर भी डिक्लेयर कर दूंगा इन द क्विज. इफ ऑल ऑफ अस आर रेडी टू स्टार्ट द क्विज, कैन हैव अ क्विक रेडी इन द चैट बॉक्स. Yes, I'll post the link in the chat box. What is the period of it? I am going to give you 2 minutes. ठीक है, 2 मिनट काफी है 10 क्वेश्चन के लिए. 2 से 3 मिनट्स. सो अभी मैं 55 पे 15:55 पे लिंक दे देता हूँ. आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल ऑफ यू टू सबमिट इट बिफोर 16:00. ठीक है. इस टाइम मैं जो है रिस्पॉन्सेज क्लोज कर दूंगा, या फिर मैं वैलिड नहीं मानूंगा जो भी 4 बजे के बाद आएंगे रिस्पॉन्सेज. सो लेट मी जस्ट क्विकली पुट द लिंक फॉर यू गाइस, ताकि कोई चीटिंग ना हो, सबके पास बराबर टाइम हो. शेयर द लिंक. I hope the instructions are clear. You just need to fill in your details and you have to mark the correct option. There are 10 questions. You have to submit it before 4, before 16:00. I'm sharing it in the chat box with you now. Goes without saying, the person who answers the most questions correctly, and if there's a tie, I'll see who answered first, who submitted first. So that is how we're going to decide the winner. Last 2 minutes, people. Last 2 minutes left for the quiz.
Last 1 minute. Hurry up. One question is marking the right answer as wrong. Okay, I'll check that. Okay, time's up, people. Last 15 seconds before I close responses. जल्दी से अपना response submit कर दो. Last 10 seconds. Okay, time's up. I'm closing the form now. Not taking any more responses. Last 5 seconds. Five, four, three, two, one. Time's up. Chalo. The form has been closed now. Let's look at the results. जल्दी से. जल्दी जल्दी में एक गलत हो गया. लेबनन वाला क्वेश्चन गलत है क्या? गलत आंसर मार्क हो गया क्या मुझसे उसका? हो सकता है. इट माइट बी. हो सकता है मैंने गलत आंसर को आंसर मार्क कर दिया हो. लेट मी जस्ट चेक. ओह ओके या माय बैड. सो नो वन गेट्स मार्क्स फॉर दैट. उसमें आई थिंक करेक्ट आंसर मार्क नहीं है. मिस हो गया उसमें करेक्ट आंसर को मार्क करना. या फिर उसमें गलत आंसर को सही मार्क कर दिया है. बट एनी वे, सो दिस बिकम्स अ 9 क्वेश्चन क्विज देन. लेट्स लुक एट द रिस्पॉन्सेस. I'll just check who has the maximum correct responses. Okay, so let me just quickly hide the details because I don't want to reveal personal details on the screen. I'll just take the timestamp, name, and other things. Where is the hide wala button? Yeah. Just 1 second, guys. All right, so I'm gonna display the scores now. These are the scores, guys. Everything absolutely being transparent. Agastya scored 9 marks, Shreya scored 9 marks, Priyanshi scored 9 marks, and Adrita scored 9 marks. Who submitted it the fastest? Agastya submitted it 1 millisecond before, I think. नहीं ठीक है वो तो next response है. Approximately few seconds ago as compared to Shreya. So Agastya is first for this particular quiz. Then the second position is Shreya. Third position is Priyanshi. And fourth position is Adrita. The next is the person with 8 marks, Sanvi. So Sanvi is fifth. Then we have Piyush at sixth position. Then we have PU, and then we have Ansh, and then we have Kushagra. So that is the scorecard for the quiz. Well played, guys. Well done. आई होप मजा आया क्विज में. छोटी सी क्विज थी ये तो, इजी पीजी सी. नेक्स्ट क्विज जो हम फ्राइडे को करेंगे दैट्स डेफिनेटली गोना बी अ मेंटी क्विज.
आज मेंटी क्विज अवेलेबल नहीं था. हाँ, लेबनन वाला आई नो क्वेश्चन गलत है. दैट इज एरर ऑन माय पार्ट. Lebanon is the right answer for that question, so you can give yourself marks for that as well. But for this question, the winner is Agastya. So you all can congratulate Agastya. Kudos to you. Well played. Well done. And that brings us to the end of this particular quiz and this particular class. Next जो हम quiz करेंगे Friday को, वो हम menti quiz करेंगे. उसका topic क्या रखें? कोई स्पेसिफिक टॉपिक रखते हैं उसका. चलो मिलिट्री एक्सरसाइजेस से स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद डूइंग मिलिट्री एक्सरसाइजेस. And I want all of you guys to come prepared with a quiz on military exercises. Now, this does not necessarily have to be the recent ones or the current affairs wali, क्योंकि current affairs तो अभी start ही हुए हैं. But all the military exercises which are conducted, especially with focus on the exercises in which India participates. ठीक है. So India वाली military exercises पे we have a menti quiz. That is specifically a menti quiz on Friday in the Hindu analysis class. ठीक है. That is sorted. Chalo, that's all for today's class, guys. Thank you so much. And thank you for being so patient and bearing with the network glitches, connectivity issues, all of those things. I'll ensure that this does not happen in the future. And yeah, that's all. Take care. Bye bye. See you in another class. Signing off.